अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर आपके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ट्रैवल के हवाले से कुछ अपडेट शेयर करनी थी और विक्टोरिया के जो प्रीमियर है उनकी तरफ से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है कि उनका भी रोड मैप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ओपन होने लगा है और उसके बाद बाकी कुछ और इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। फर्स्ट अपडेट, विक्टोरिया हैज़ इट्स आई ऑन फ्रीडम। प्रीमियर डैनियल एंड्रोस अनाउंस लॉकडाउन विल एंड ऑन थर्सडे। जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बात की कि वो एंड होगा थर्सडे नाइट विद द स्टेट ड्यू टू हिट 70% फुली वैक्सीनेटेड दिस वीक। तो इनके भी जो डबल डोज थे वो 70% तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने एक बात की है कि 2 स्टेट्स जो होंगी, जो बिग स्टेट्स होंगी, अगर वो लॉकडाउन से फ्रीडम हो जाएंगी उसके बाद बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, विजिटर वीज़ा वाले हैं, तो इनका मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा कंट्री में आने के लिए। Open to international travel at 80%, follow the New South Wales model? Yeah, look, I think it's probably the better point to make about what New South Wales, what Dom announced the other day, is that he's getting rid of hotel quarantine. We will do a similar thing. It'll be home-based, particularly for those that are double-dose vaxxed. In terms of international borders, with the greatest of respect to Dominic, that's not a matter for state premiers. That is a matter for the federal government. But we want to get open and open to the world as fast as we possibly can. And because we're going to be one of the most highly vaccinated places, certainly New South Wales and Victoria, anywhere in the world, then that can become a competitive advantage for all of us. But you'll do home quarantine? Yeah, we'll do not 14 days. It'll be less than 14 days. If you're double dose vaccinated, then you'll be able to quarantine at home, and hotel quarantine will be a thing of the past. At least for people who've got the absolute protection of being double dosed. Yeah, I think for a lot of people, a lot of travellers, that's still really off-putting, and that sounds like the reason New South Wales has axed quarantine altogether. Would you consider doing that? Well, they are currently running a trial. They're currently running a home quarantine trial. So I think what's going to happen here is we'll have a National Cabinet meeting quite soon and we'll be able to talk about all of those issues, and the Prime Minister will be able to tell us what he's going to do on the international borders. You know, state premiers and state governments have done lots of work and made lots of decisions over the last 20 months, but we don't issue passports, we don't issue visas. So the status of the borders really is a matter for the federal government, but we'll get some clarity around that very soon. And look, we'll get to a point, if you are vaccinated, there perhaps won't be any quarantine at all if you've been tested, and as we move through the weeks and the... Next step, 88.1% of the 12 plus population has received a first doses. 88% तक फर्स्ट डोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद बाकी 62.9% तक, ऑलमोस्ट 63% तक फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो बाकी आपके साथ इसमें मैंने जो स्टेट्स की बात की थी आपके साथ, तो स्टेट्स में जो सबसे जो 2 स्टेट्स के बारे में बात की थी पीएम ने, वो एक NSW की बात की, तो उसके बाद विक्टोरिया की बात की। तो विक्टोरिया भी आपके सामने ही है कि वो नेक्स्ट अभी थर्सडे की बात की, थर्सडे नाइट की, कि उनका भी लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा। सर आज की अपडेट में सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं उन्होंने लॉकडाउन एंड की बात की। उसके बाद बाकी इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ इनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, टूरिज्म सेक्टर है, विजिटर वीज़ा वाले हैं, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 2022 में ये पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं फरवरी तक, बिकॉज टिल दैट टाइम जितने भी सिटीजन्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया भी 1 नवंबर से स्टार्ट होंगे, तो अराउंड 3.5 and 4 months तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारे 4 months में ऑस्ट्रेलिया रीच कर जाएंगे। उसके बाद जिस तरह पीएम ने बताया है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे। सो होप करते हैं कि स्टूडेंट्स का नेक्स्ट स्टेप जल्द से जल्द आएगा। सो आज की वीडियो यहाँ तक थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।